Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two next most senior judges in order of seniority. Now, the 1980 rules, Order 11, read in this manner. Because if you have to correlate, it may be important to do that. पहले अगर इस एक्ट को पढ़ लें हम ताकि हम सबको पता लग जाए कि इसमें क्या है क्या नहीं. Sir, which rule were you referring to? If we want to continue like this, we'll go ahead. But my viewpoint is this, that this frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as a full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel that every institution must remain within its own domain. Khwaja Sahab, I'm here on this side. It's right here. I'm here on this side. If you could kindly formulate your exact legal proposition. What you are suggesting is that you do not have any objection to the untrammeled, unaccountable powers in one office. Is that your question? My contention is this. Are you supporting what has happened in the past? I am supporting what happened in 1980, and I'm supporting... What is your legal proposition? My legal proposition is this, that this power of forming the benches, etc., is the domain of the Supreme Court itself. If this is your proposition... I think you should read the law first, Khwaja Sahab, and then formulate the points. Let us first formulate. Act पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर एक-एक को It is only 2 pages act. It is only. Let me follow the Chief Justice. Khwaja Sahab, Let me read the law, and then we make my submissions. If I may make your job easier, undoubtedly it's sometimes very difficult and disconcerting if I know it's very difficult to answer questions. Zara sun lijiye, Hazur. If you are receiving a lot of questions from different sides, you don't even know who is asking the questions. If one of your associates jots the questions down, please don't respond to it. We let you argue it as you want to. Let me just finish. You read the act, you just point out, either you say this entire act is ultra vires a constitution, that's one contention. If there are certain particular portions of the act which you think are ultra vires a constitution, please, as you're arguing, point that, formulate the contention and move ahead. You don't need to respond to every query immediately. It will make your life very difficult because you won't even know where the question is coming from. One of your associates can take, and when you're done with your arguments, you can absorb the questions and respond. We will give you time to respond to the queries. Okay? So, please continue with the act. Just can you take down the points and so that you can answer them. Second part of this section 2. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including the holding meetings and constitution of benches, provided that till such time the procedure is determined under this subsection, the meeting of the committee for the purposes of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. The decisions of the committee shall be by majority. Now this is what the Parliament has enacted. And the provision which they have used is Article 191. At this stage, I would simply say this thing, that when myself and Imtiaz will be answering your question and promulgating, we would certainly refer to item 55
of the federal legislative list, which spells out whether the parliament can make enactments relating to Supreme Court. If I may read 55 as this state, it may be. Argue as you want. Well, all right, I'm just saying that your lordship should note item 55 of the federal legislative list. Let's read it together. You wanted to read it, let's read it. We'll read it together. Khwaja Sahab, I think before going, I'm here, left side, your right side. Before going to this entry, if you want, you may read Article 191 of the Constitution. What it says. 191 also. In fact, I can start with Article 70, go on to 142, and then read 191 and go up to 55. Article 70 gives the power of legislation, and it is to the effect legislative procedure. And what it says is, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate. I will skip that. I'll go straight on to subclause 4 of Article 70. In this article and the succeeding provisions of the Constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the 4th schedule, sir. Then there is Article 141. Subject to the Constitution, Majlis and Shura Parliament may make laws, including the laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and the Provincial Assembly may make laws for the province or any part thereof. 142, subject to the Constitution, Majlis and Shura shall have exclusive powers to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Then I take your lordship to 191, which is to the effect subject to the Constitution, again, subject to the Constitution and law. It is the Supreme Court. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The crucial words here are that the power has been given to the Supreme Court to regulate its practice and procedure. These powers are under the Constitution, your right side. These powers are under the Constitution and the law. Constitution and the law. I'll say also, I'll come to that also. Because when I read 55, then it will be clearer. Khwaja, if I may request my learned brother, I know it's very disconcerting, so many judges asking questions. So we will let you argue in your own way, and we will ask you questions. You don't respond, you just note it. And because then I know your chain of thought will... Point is noted. Chain of thought we don't want to break. Constitution and law. Point is noted. Constitution and law. Point is noted of my lord that what will be my proposition, and also what Justice Mansoor Ali Shah has said, that how will I go and make my propositions and to say how this law is not obtainable. But may I read 55 as it states? Please do. Because your lord may ask questions on that. 55 of the federal legislative list. Fourth schedule. It says jurisdiction and powers of all courts can be subject to the power of the Parliament under 142 and 74. Just read it as is. Don't interpret it. Then you can interpret it. Okay, I'll go along with that. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list, and to such extent as is.
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के समात 15 रुकनी फुल कोर्ट ये समात कर रहा है। पटिशनर्स की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। 15 रुकनी फुल कोर्ट समात कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस समात के मौके पर समात शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि ताख़ीर के लिए माजरत चाहता हूँ। फुल कोर्ट इजलास चल रहा था। इस फुल कोर्ट इजलास में हम इस बात का तयन कर रहे थे, फैसला कर रहे थे कि सरकारी टीवी पर यह मुकदमा लाइव नशर करने का पायलट तजर्बा किया जाए। एक कमेटी तश्कील दी है जो बराह रास्त नशरियात के मुमकिन या नामुमकिन होने का जायज़ा लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम में से बेंच के कुछ मेंबरान ये केस पहले भी सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से दलाइल मांग लिए और ये भी कहा कि वकला दलाइल मुख्तसर और जामे रखें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मेरिट पर भी पार्लियामेंट कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार समात बराह रास्त नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की फुल कोर्ट समात की गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समात बराह रास्त दिखाई जा रही है। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और मुल्क की तारीख में पहली बार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई है। आपको बता रहे हैं कि दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम के इस वक्त दलाइल जारी हैं। सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समात कर रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट की ये कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज हुआ है और मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। बराह रास्त कवरेज में खलल आए इसलिए समात को मुख्तसर रखें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया है। उनकी जानिब से वकला को ये भी कहा गया कि बराह रास्त कवरेज जारी है, मुख्तसर वक्त में अपने दलाइल को मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समात कर रहा है और तमाम तर अदालती कार्रवाई इस वक्त बराह रास्त नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की फुल कोर्ट समात इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समात बराह रास्त दिखाने पर इत्तफाक किया। रूम नंबर 1 में इस वक्त 5 कैमरे लगाए गए हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही केस मुकर्रर किया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ के बाद उनकी जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कॉज लिस्ट में जारी किया गया। आज उनके ओहदा संभालने का पहला दिन और पहला केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की फुल कोर्ट समात की जा रही है। समात से पहले सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच की जानिब से एक फुल कोर्ट इजलास हुआ। इस इजलास में ये फैसला किया गया कि सरकारी टीवी पर यह मुकदमा लाइव नशर करने का पायलट तजर्बा किया जाए। इसमें कार्रवाई में किसी किस्म का कोई खलल ना आए, इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी है जो बराह रास्त नशरियात के मुमकिन या नामुमकिन होने का जायज़ा लेगी। नशरियात के मुमकिन होने का जायज़ा लेने के बाद ये बराह रास्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की पहली बार लाइव नशर की जा रही है। वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से दलाइल मांग लिए और ये भी कहा कि वकला दलाइल मुख्तसर और जामे रखें। 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे हैं। 15 रुकनी फुल कोर्ट ये केस की समात सुन रहा है। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीमी की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में नए दौर का आगाज और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फुल कोर्ट समात बराह रास्त
नशर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 बिल की इस वक्त समात बराह रास्त नशर की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी बेंच ये समात कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की फुल कोर्ट समात इस वक्त जारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में और तमाम 15 जजेस ये समात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जा रहा है। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं और तमाम तर ये कार्रवाई आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तारीख में पहली बार बराह रास्त देख सकते हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस वक्त फुल कोर्ट बेंच ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समात कर रहा है। वकला दलाइल मुख्तसर और जामे रखें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। दूसरी जानिब उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि बेंच में कुछ जजेस ऐसे हैं जो ये केस पहली बार सुन रहे हैं। मैं फुल कोर्ट की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। दूसरी जानिब दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से ये दलाइल दिए जा रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट समात की कार्रवाई इस वक्त बराह रास्त नशर की जा रही है। नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि ओहदा संभालने के बाद आज उनका पहला दिन है। बड़े केस की समात पहली समात इस वक्त बराह रास्त नशर की जा रही है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 जजेस समेत ये समात इस वक्त बराह रास्त नशर की जा रही है। 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। इनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं जो इससे पहले भी उसमें मौक़िफ़ क्या अपनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से वकला से दलाइल देने की दरख्वास्त की गई और साथ में ये भी कहा गया कि वकला दलाइल मुख्तसर रखें। This argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the parliament wanted to address. If I may add, there is a judgment of this court and the judicial pronouncement on that as to what procedure would be followed by the Chief Justice to invoke jurisdiction of this court under Article 183. And it says where a bench, 3-member bench, 2-member bench, but a bench comes to the conclusion that there is a matter of public importance affecting fundamental rights, they may recommend to the Honorable Chief Justice that a bench be constituted. And the Honorable Chief Justice, after seeing the reasons that the bench has assigned for recommending, he may or may not, but at least he would record reasons why he thinks he disagrees with the recommendations, or thereafter he can proceed. And so there is a judicial pronouncement on that already in place. In fact, I'm sorry, since may I say, Honorable Chief Justice has said that we can only ask questions and not for you to respond immediately. So let me, with all due respect, ask a supplemental to what the supplemental put to you by my learned brother, colleague Justice Atar Minallah. It seems to me that the power